Am I audible to everyone? Good evening, sir. Yes, sir. Good evening. Okay. Yesterday I told you everything basic. Right. Today we will talk about nuclear stability. My screen is visible. Today we Yes. will talk about nuclear stability. We have lot of different theories, three main theories to understand nuclear stability, but no theory is 100% perfect. कोई भी theory 100% perfect नहीं है. ओके अब आप सोचेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो भी न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण फोर्स से. इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन भी होने के बावजूद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही है, लेकिन एक और फोर्स है. कौन सा फोर्स? विच फोर्स इज देयर? कार्तिकेय, न्यूक्लियर फोर्स. देयर इज अनदर फोर्स. नितिश, मुस्कान, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन तो होते ही हैं. देखो बहुत सारे प्रोटॉन तो हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हैं. तो ये दूर टूट क्यों नहीं जा रही है न्यूक्लियस? why this nucleus is not getting why it is not breaking? Why it is not breaking, bachcho? Because the electrostatic force of repulsion is not that much strong as compared to nuclear force. Nuclear force is 100 times more powerful as compared to electrostatic force. That's why it is stable. But still, imagine a nucleus in which number of proton is very greater than number of neutrons. Now this nucleus is unstable. Understood? If in a nucleus number of proton is greater than number of neutrons, then this nucleus must be unstable. Now let's talk about another nucleus. In this nucleus, bacho, number of neutrons is very greater than number of protons. Means N is very greater than Z. This nucleus is also unstable. Understood? This nucleus is also unstable. So what kind of nucleus are stable? In which number of protons is equal to number of neutrons are stable. So this is one of the theory. As I told you, no theory is 100% correct. कोई भी theory ऐसी नहीं है जो 100% correct है. Now there is another theory which can explain nuclear stability. Let me tell you, we are talking about nuclear stability. Now let's talk about another theory. This theory says that n by z ratio, which is very close to what I have explained to you. If n by z is close to 1, see, n by z is 1 means number of neutrons is equal to number of protons. Okay. So all those nucleus which are close to n by z line are stable, and all those nucleus which are away from n by z line are unstable. Understood? All those nucleus which is close to n by z line are more stable as compared to those nucleus which are away from n by z equal to 1 line. Understood, bacho? N by z equal to 1 means n is equal to z line. Here, suppose you have taken number of neutrons, and here suppose you have taken number of protons.
Already it is not easy to understand nuclear stability. I have taken a photograph. You can see this is n by z line, right? So all those nucleus which is above, which is very far from n by z, they are unstable. They all are unstable according to this theory, and these nucleus also unstable. Why? If any nucleus is at a big distance from the n by z line, n is equal to z line, it means these nucleus are unstable. But if a nucleus is close to n by z line or on the n by z lines, they are stable. And all ideal gases, bacho, nucleus of all ideal gases, number of neutron and proton are same. For example, please give me some example of ideal gas. Argon, krypton. In all these ideal gases which are very much stable, has equal number of neutron and proton. Am I right? अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है तो फिर ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियाइड स्टेबल होते हैं. लेकिन अगर एन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एन ज्यादा होता है जेड से और नीचे जेड ज्यादा होता है एन से, तो ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है. तो ये वन ऑफ द थ्योरी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये थ्योरी सही है या गलत है. कई कई बार कई जगह ये थ्योरी सही है, कई जगह ये थ्योरी गलत है. समटाइम दिस थ्योरी is right and sometimes this theory is wrong. So this theory is stable, is able to explain why ideal gases, why nucleus of ideal gases are stable. Okay, so I'm again saying you that this theory is valid only for some of the nucleus. Right now, there is another theory, bacho. There is another theory which try to explain nuclear stability. In that theory, उसमें लिखा रहता है कि actual mass of nucleus is less than the sum of masses of nucleons in it. Let me try to explain you. Imagine a classroom. Okay, this is a classroom, and in classroom there are 10 students. There are 10 students like this. Okay, 5 ये हैं और 5 ये हैं. थोड़े अलग है 5. 5 पाकिस्तान के हैं और 5 चाइना के हैं. ओके, सो ये जो है सारे 50 kg है. 50 kg, 50 kg, 50 kg, 50 kg, 50 kg, and all Chinese are, let us assume 60 kg. Okay, so what should be the total mass of student? What should be total mass of all the students? What should be the total mass of the students inside the classroom? 550. 300 and 250, 550. 550. है ना? Suppose these are the nucleons, so total mass should be 550 kg. But when you are measuring their mass, mass should be, total mass should be 550. But when we measure, we get total mass less than 550 kg. Why? This difference is known as मास डिफेक्ट. और मैंने एकदम सही एग्जांपल लिया है भैया, चाइना एंड पाकिस्तान. ओके, तो एक्चुअली ये जो मास है ये कहां गया? एक्चुअली देयर इज अ स्मॉल बॉन्ड बिटवीन दीज टू. क्या है? पाकिस्तानी बन गए हैं नौकर और चाइनीज बन गए हैं मालिक.
चाइनीज इतने आलसी और अमीर हो गए हैं कि वो अपना काम खुद कर नहीं सकते, और पाकिस्तान के लोग भिखारी और गरीब हैं, तो उनको काम रोटी चाहिए, तो ये इनका काम करते हैं, इनको रोटी मिलती है। समझे कार्तिक है? तो इन दोनों ने क्या कर रहा, बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। कुड यू अंडरस्टैंड दैट? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन दोनों के बीच में। हर चाइनीज और पाकिस्तानी के बीच में मालिक और नौकर का संबंध है। कुड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? Could you understand why China and Pakistan? So there is a strong bond between China and Pakistan. So their mass should be 550, but when we calculate it, the actual mass is less than 550. This known as mass defect. So the difference in mass, there is some difference in mass. Multiply this mass difference into c square, so you will get an energy which is known as binding energy. Again, I told you this is another theory which can explain nuclear stability, but no theory is 100% correct. बार बार मैं अनवित बोल रहा हूं कि कोई भी थ्योरी 100% करेक्ट नहीं है। समझ रहे आर्यन? अपार, there is some problem with every theory. So this theory is very famous and very close to the perfect, not 100% correct but very close. In the same way, a nucleus is made of neutrons and protons. Okay, suppose any nucleus has n neutrons and z protons. Okay, suppose this has n neutrons, capital N into Mn, and it has z protons, capital Z into Mp. Suppose number of protons Z, mass of one proton Mp, number of neutrons N, mass of one neutron Mn. So total mass should be total mass of nucleons. अरे यार, अब न्यूक्लियॉन्स की स्पैन कितना दिक्कत है यार ये। Total mass of nucleons should be, one proton has mass mp, two proton 2 mp, three proton 3 mp, z proton z mp, plus n mn. Understood? Number of neutrons, this should be the total mass, right? This should be the total mass of nucleus, because nucleus is made of z protons and n neutrons. This should be total mass of nucleus, but total mass of nucleus is less than total mass of nucleons. So actual mass, total mass of nucleons, Z into Mp minus N into Mn, plus minus actual mass. This is equal to mass defect. This is known as mass defect. Understood or not? Any doubt? If you have any doubt, please raise your hand. Please raise your hand if you have any doubt, or you can talk to me. You can send message. Let me add it. Okay, I cannot edit name.
You can send me message here. I'll send you a hi message. दो Rahul Soni है ना here. Here you got a message hi from the Rahul Soni. To this Rahul Soni you can talk. Any doubt in mass defect, Pritpal? Abhijit? Akash? Vinayak? Mass defect समझ आया Vinayak? Yes, sir. Okay. रोहित समझ आया मास डिफेक्ट? Yes, sir. सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन मिलने वाले आईटी मेंस में। और आज की खबर पढ़ी? हाँ क्यों? हाँ सर। फरवरी लास्ट वीक आईआईटी मेंस खुश खबरी। खुश हो के नहीं हो? हाँ बहुत जल्दी ये समय आ गया, क्यों? नवंबर ही तो चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। एंड योर क्लास 12th will start, class 12th exam will start second week April. तो हमारे पास इतना समय होगा क्या मिला पूरी 12th दोबारा रिवाइज कर पाए? So and still we have lot of time. February last week, lot of time we have. आप please daily practice करें, okay? Now we got mass defect, right? Now this is known as mass defect, okay? अब what is binding energy? According to Einstein mass energy relationship, we can calculate our energy, which is known as binding energy. Binding energy is given by mass defect into c square. Mass defect तुम इधर से निकालोगे. So if value of binding energy is high, it means nucleus is stable. If the value of binding energy is low, nucleus is unstable. The binding energy per nucleon, this is total binding energy, okay? Total number of nucleons क्या होता है? Z plus N means A. I told you neutrons and protons combinedly called nucleons. So total number of nucleons is Z plus N, that is A. Okay. So the second theory says that the value of binding energy per nucleon we will find binding energy upon A. This is known as binding energy per nucleon. And its value, if its value is high, the nucleus is stable. This is second theory. Understood? Could you understand, bachcho? What is binding energy? What is mass defect? And what is binding energy per nucleon? If you divide total binding energy by A, you get binding energy per nucleon. Understood? Anushka. आर्यन बेटा हो गया? दर्शिता आई है? दर्शिता आई है? नहीं आई है दर्शिता? चलो कोई नहीं. ओके, आगे बढ़े. So what second theory says? If binding energy per nucleon is high, then nucleus must be stable. I have a graph. According to this theory, which nucleus has the highest binding energy per nucleon? Look at the y-axis. Look at y-axis what we are taking. Binding energy per nucleon. So which nucleus has highest binding energy? So according to binding energy per nucleon theory, iron is most stable nucleus among all elements.
of periodic table. आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शायद 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. It has binding energy per nucleon approx 8.8 mega electron volt. ठीक है. Now you start moving right hand side. You can see graph is going low. Means binding energy is say decreasing. Binding energy is decreasing. Do you agree? So uranium 238 has very small binding energy. So this must be, according to this theory, this must be. Am I right? Uranium must be unstable from this theory. And yes, it is unstable. Uranium is actually unstable. That's why it shows fission reaction. That's why it shows fission reaction. और अपने आप को क्या कर लेता है तोड़ के अपने आप को तोड़ के दो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर लेता है जिनकी ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है. Could you understand that? तो फिर ये क्या करने चाहिए उस हिसाब से? What these should do, which has less binding energy, what they should do? What kind of reaction they should show? Fusion reaction. The fusion. Fusion reaction to become more stable nucleus. Understood binding energy per nucleon? Very important. This is coming in your class 12th. Very important. तुम लोग को ऐसे याद रखना है कितनी बार ऊपर नीचे हुआ. ओके 8 से 6 के बीच हीलियम, फिर थोड़ा ऊपर कार्बन, फिर ऑक्सीजन को 8 के ऊपर ले जाना है और फिर सल्फर आ जाएगा ऑक्सीजन के थोड़ा ऊपर. तो तुम्हें याद रखना है कि शुरू 2 से नीचे से शुरू करना है. ठीक है. फिर एक जिगजैग, 1 2 3 जिगजैग और इधर आ गए. समझ गए? लाइक ऐसे एक. बहुत मुश्किल है. दिस वेरी डिफिकल्ट. ये मैं गया ऊपर तक, फिर एक आया लिथियम के लिए नीचे, फिर कार्बन के लिए ऊपर जाऊंगा, फिर नाइट्रोजन के लिए नीचे आऊंगा, फिर ऑक्सीजन के लिए ऊपर जाऊंगा और फिर सल्फर को टच करते हुए ऐसे बना दूंगा. Would you understand that? लेकिन ये देखो कितना प्यारा ग्राफ है. It is difficult to make graph. You will have to do practice again and again if you want to make same graph. Okay. आप देखो ना पहले कहां तक गए? हीलियम के लिए गए और फिर लिथियम के लिए नीचे आए, फिर आप कार्बन के लिए ऊपर गए, फिर नाइट्रोजन के लिए नीचे आए, फिर ऑक्सीजन के लिए ऊपर गए, फिर ऑक्सीजन के एक आइसोटोप के लिए नीचे आए, फिर सल्फर के लिए ऊपर गए. सो यू नीड टू रिमेंबर कि कहां पे कौन सी पीक पे क्या होना है. इट इज नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट टू कीप इन माइंड. ओके मग रट लोगे इसको? कैन यू मग अप दिस? कैन यू मग अप दिस? Yes, sir. सो व्हाट इज सेकंड थ्योरी? दूसरी थ्योरी क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होनी चाहिए? ज्यादा. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से विच न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल? आयरन. And according to N by Z line, N is equal to Z line, which nucleus is most stable? Ideal gases. Okay. Now there is another theory which talk about nuclear stability. The name of that theory is packing fraction.
क्या? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालते हैं और पैकिंग फ्रैक्शन की मदद से हम कमेंट कर देते हैं न्यूक्लियर स्टेबल है कि नहीं। ओके, नाउ राइट नेक्स्ट थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। एक मिनट बच्चों, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। मास डिफेक्ट अपॉन, क्या होता था? मास डिफेक्ट अपॉन एटॉमिक मास होता था। हाँ, लिखो पैकिंग फ्रैक्शन। This is another method to determine nuclear stability. ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन is equal to mass defect upon atomic mass. But I think there is some mistake I am making, but अभी तो ये याद आ रहा है मुझे। कहीं किसी किताब में देख के बताओ बच्चों, कुछ और तो नहीं है? मुझे लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ, मैं फॉर्मूला भूल गया। अगर तुम में से किसी को याद है तो बताओ, पढ़ा है कभी तुम लोग ने? सारा बताएगी। What is AM? ओके, करेक्ट है, अपन करेक्ट है, कहीं गलत नहीं है। 100, वी आर 100% करेक्ट। आई क्रॉस वेरीफाइड। So if packing fraction is, so if the value of packing fraction is positive, means ये उल्टा होता है थोड़ा सा। पैकिंग फ्रैक्शन ये ऐसे लिख दो, जो मास होना चाहिए यार, लेकिन ये तो उससे कम नहीं आता है एटॉमिक मास। ओके, लेट्स लीव इट। ज्यादा आई डोंट नो मच अबाउट दिस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट इन मोर डीपली। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन आप खुद पढ़ ले, मुझे भी ज्यादा नहीं पता, भूल गया मैं, और किताबों में है नहीं, मिल नहीं रहा। चलो अब अपन वापस से फोकस करते हैं अपनी दो थ्योरीज पे। फर्स्ट इज एन बाय जेड थ्योरी एंड सेकंड इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो फॉर आईआईटी both n by z theory and binding energy per nucleon both are important, but for NEET only binding energy per nucleon theory is sufficient. This theory is only required. Okay, let's see what type of question they will give us. Calculate the mass defect of a deuteron given mass of deuteron
2.014102. Mass of neutron 1.008665 AMU, and mass of proton 1.007825 AMU. बताओ भाई कितना आएगा मास डिफेक्ट? So I'll say Z into mass of proton plus N into mass of neutron minus actual mass. So deuteron has one proton and one neutron. So 1.008665 plus 1.007825 minus 2.014102. Because I am copying from a book, so I can calculate very fast. I got delta M as 0.002388 AMU. हो गया बच्चों? ये हो गया आपका मास डिफेक्ट. तुम भी क्या याद रखोगे? So suppose if I want mass defect of deuteron per nucleon, then sorry, I want binding energy. I want binding energy of deuteron. What you will do? What you will do? Delta M into C square. So if you want, see, this is an AMU. You will have to convert it into SI unit. You cannot do it directly. Better यही होगा कि हम इसको शॉर्टकट से करें. शॉर्टकट ये कहता है कि if delta M is in AMU, then put C square is equal to 931.5 mega electron volt. है ना? मुझे एक बार याद करने दो. वैसे तो इतना ही है. हाँ, 931.5 mega electron volt. 100% correct. Okay, so you get binding energy in electron volt. So we will get binding energy in mega electron volt. Okay, so binding energy is equal to delta M. Delta M is 0.002388 into 931.5. You got binding energy in mega electron volt. So this you can write at the place of C square, and mass you can write in AMU. Now solve this. कितना आएगा? चिन्मय, और कोई तो करता नहीं है ना? भगवान करे चिन्मय की सबसे अच्छी रैंक आए. अब सबको लगेगा मैंने चिन्मय को क्यों बोल दिया. So you got 2.224422. 2.224422 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब ये ग्राफ सही है. See this? यहां पे है ना? नहीं यार, 2 point something आया, मतलब इधर आना चाहिए था ये थोड़ा. खैर, hopefully everyone understood how we calculated binding energy with the help of mass defect. Just multiply by C square, and if mass defect is in AMU, you can write 931.5 at the place of C square. Now let's solve some easy numericals based on binding energy or binding energy per nucleon. कुछ ज्यादा ही आसान सवाल इसमें आते हैं. For example, this is question number 7 of mains module, exercise 1. The question number 8, sorry. The mass of proton is 1.0073 AMU, and that of neutron
1.0087 AMU. The binding energy of is given actual mass of helium is 4.0015 AMU. करो. ऑप्शन ए है 0.0305 जूल, 0.0305 अर्ग, 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.061 U. What is this U? I think we should find mass defect first of all. It has 2 protons, 2 neutrons. Okay. So mass defect should be 2 into mass of neutron plus 2 into mass of proton minus actual mass. From here you will get mass defect. बताइए कितना आएगा? कोई नहीं बता रहे हो ना तुम लोग आज. बहुत सही बेटा, बदला लूंगा मैं, मत कर लो हरकत. मेरे से कैलकुलेट करवा रहे हो ना, देखना पाप लगेगा. 2.0174 प्लस घोर पाप लगेगा तुम लोग. 0.0305. देखा, चिन्मयी नहीं बताया फिर से बता बेटा. 0.035 035 AMU delta M 305 305. Chinmay, is this correct? Yes, sir. So binding energy will be delta M into 931.5 mega electron volt. So 0.0305 931.5. गलत नहीं होना चाहिए, बता दे रहा हूँ. Perfect. 28.39 mega electron volt. This is binding energy of alpha particle, of alpha nucleus of alpha, means helium. Can you help me in finding binding energy per nucleon? I will divide it by 2 or 4. कितना आ रहा है? 7.09 mega electron volt. This is binding energy per nucleon. Okay, understood बच्चों? Now let's talk about nuclear reaction. Very important for IIT Advanced. All right. Nuclear reaction. बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन कब होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन के पीछे क्या कारण होता है? अनस्टेबल न्यूक्लियस. अनस्टेबल होता है न्यूक्लियस. सपोज पैरेंट न्यूक्लियाइज आर अनस्टेबल, so they will perform a nuclear reaction to become more stable. Like this we can say there will be a nuclear reaction, right? Now imagine nuclear reaction of 2 elements, let's say A and B.
They are parent nuclei, A plus B. Parents nuclei, and they form C and D. Daughter nuclei plus Q value. What is this Q value? Can anyone explain what is Q value? What is Q value? Energy. Energy present in the reaction. Okay, or Q value is energy of reaction. Understood? Hello? Yes, sir. Could you understand that? Okay. Now, how to find Q value? How to calculate Q value of reaction? Energy released in the reaction is Q value. You can say that energy released in the reaction is Q value of reaction. बट जरूरी नहीं है कि हर बार एनर्जी निकले, हो सकता है आपको एनर्जी देना पड़ जाए. Okay, this is also possible. You'll have to give energy, maybe possible. Okay, always remember we calculate Q value by this. Q value is equal to total binding energy. Total binding energy of products minus total binding energy of product. तो उसको क्या बोलेंगे? Reactants. Okay. Understood? कोई डाउट तो नहीं है? और else आप ये भी कर सकते हैं. There is another formula. Mass of C plus mass of D minus mass of A plus D. Difference in mass. Difference in mass into C square. Mass of parent nuclei. Sorry, mass of parent nuclei पहले आएगा इधर. I am sorry. Because of mass of parent nuclei will be greater and daughter nuclei will be less. So where is the mass? Where mass gone? Can you tell me? Where is mass gone? Can you tell me if mass is reduced? If mass of total mass of parent nuclei is more as compared to total mass of daughter nuclei, can you tell me where is mass? Mass converted into Energy. energy, and that energy is known as Q value. Q value. Okay बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं. You have two formulas to calculate Q value. Okay, now you can write this important note. Q value is present in the form of kinetic energy of daughter nuclei. बच्चों मेरे को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट समझ नहीं आते, पेरेंट और डॉटर समझ आते हैं. समझ गए ना? Could you understand that? See, Q value is energy associated in the reaction, and this energy is present in the form of kinetic energy of daughter nuclei. याद रखोगे? Will you remember this? Anyone would like to see example of nuclear reaction?
Example, uranium 235 92, bombard a neutron, you will get beryllium, krypton, 3 neutrons plus Q value. So Q value is energy produced by nuclear reaction. And it is present in the form of kinetic energy of daughter okay. Write another note. एक तरफ लग रहा है, आप लोग को आवाज आ रही है ना बच्चों? लिख रहे हो ना साथ में? कठिन तो नहीं लग रहा है? It looks like chemistry, right? Am I right, Shreya? श्रेया Quite सो a गई. bit, sir. कार्तिक आसान है ना? देखो फिजिक्स आ गई. नोट, लाइटर daughter nuclei will carry most of Q value. मतलब जो हल्का होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो इसमें ज्यादा एनर्जी किसके पास है? Q वैल्यू का मैक्सिमम हिस्सा किसके पास है? Who have maximum portion of the Q value? Neutrons. ओके क्योंकि वो हल्के हैं इसलिए. अंडरस्टूड? Okay, there should be no doubt. Now imagine another nuclear reaction in which an unstable nuclei or unstable nucleus convert decayed alpha particle plus alpha particle. Alpha particle means what? Helium nucleus without electron cloud plus Q value. So can you tell me out of these two daughter nuclei which have most of the Q value, which have most of the energy? Alpha particle. Why? In form of how you can say this? How you can say this? From conservation of what? Linear momentum. From conservation of linear momentum, these two mass have same momentum. So kinetic energy is equal to P square by 2m. Smaller mass, more kinetic energy. अगर इतनी समझ है तो बढ़िया है, नहीं तो रट लो. You can mug up this. Okay. Hopefully you understood Q value of the reaction. Right? Now write another note. Last important note. Okay. Very important. अगर Q value पॉजिटिव है तो एनर्जी रिलीज हुई है, और अगर Q वैल्यू नेगेटिव है तो एनर्जी देनी पड़ी है रिएक्शन कराने के लिए. ओके, इफ Q वैल्यू इज पॉजिटिव मींस एनर्जी इज released, and if Q value is negative means energy is absorbed.
स्पेलिंग भी गलत कर, अब ठीक है आई थिंक. ओके, राइट अनदर नोट. If Q value is positive, means daughter nuclei more stable, क्योंकि एनर्जी निकली है, मतलब अब एनर्जी निकल गई तो अब स्टेबल हो गया. If Q value is negative, it means daughter nuclei is unstable. So now only nuclear reactor, nuclear fission and fusion is left. But before that, we'll have to solve lot of questions. Before hydrogen bomb, nuclear fission and fusion, we'll have to learn, we'll have to solve a lot of problems based on the nuclear physics, nuclear reaction. So be ready in the next class to solve a lot of questions. Okay? And next class we will solve a lot of questions क्योंकि अब मेरा हाथ दुख गया लिख लिख के. ठीक है बच्चों? I'm sending you notes in the group. अगर कुछ लिख नहीं पाए हो तो लिख लो and you can take a short break. कोई डाउट हो तो प्लीज लेके आए. ऐसा कैसा न्यूक्लियर फिजिक्स चल रहा है कि मैं एक तरफ से बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, डाउट ही नहीं पूछ रहे. या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं या तो आप स्क्रीन मोबाइल चालू करके सो जाते हो.